Abhigyana Singh and Azima Fatima. For class 4th B, we have Ali Jafri, Bisma Khan and Muhammad Muzammil. For class 5A, we have Ansh Singh, Muhammad Azan Ahmed. For class 5B, we have Zubia Ikhlaq and Samira Afreen. For class 6A, we have Angel, Syed Anha Rubab and Krati Singh. And last but not the least, we have class 6B, Arya Gupta, Ayushi Chaurasia and Digvijay Singh. Thank you everyone. Thank you sir for doing the honors. Oh, I am still hypnotized by the charm and happiness on the innocent faces of the students while they were being felicitated. Audience, make sure that the clappings and hoot are grand success and they do deserve your appreciations. Now, buckle up your seats and let's get ready to rock and roll. Okay, Alhuda, what's next up? We are again heading up for another form of dance by which our students are gonna make sure will completely metamorphose your mood. This dance form is mainly practiced in the coastal regions of Goa, beginning from a slow rhythm to a faster pace. Don't worry, this performance will leave you breathtaking and dumbfounded. It's time for the high point of today's jamboree. Get immersed in some oomph and some vibes of joy in this upcoming flamboyant and everybody's favorite dance form, Foogadi!
extravagant performances. I can see many curious, happy, and excited faces in the audience. Do you want to know what's next? First of all, audience, are you enjoying? A bit louder. Better. That's like a good audience. Okay, after so many amazing performances, I think the audience needs a variation. So now, gear up for an amazing song, Ye Shaan Mastani, by one of the very brilliant voices amongst us, Adhiraj Sinha of class 12th. जैसे कि तू हंसती जहर कोई पिए जाए शाम मस्तानी मदहोश किए जाए मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए जब मैं करूं मुझे रोक देती है तू तेरी मीठी नजर मुझे टोक देती है तू तेरी हया तेरी शर्म तेरी कसम मेरे होठ से जाए शाम मस्तानी मदहोश किए जाए मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए बात जब मैं करूं मुझे रोक देती है क्यों तेरी मीठी नजर मुझे टोक देती है क्यों ऐसा लगे जैसे कि तू हंसती जहर कोई पिए जाए शाम मस्तानी मदहोश किए जाए मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए मुझे डोर कोई खींचे
song you sang. Now come on audience, let's take you to another world. Or should I reveal to a Shakespearean era? Do you want to know what's next? So come on, let's bring some drops of drama on this beautiful stage. Trial scene in the play The Merchant of Venice remains one of the most celebrated works of the bard. Shakespeare has indeed managed to grasp the attention of his audience in this scene through his clever writings and accurate portrayal of the Elizabethan age. The entirety of the plot revolves around the paltry sum of 3,000 ducats. And a pound of flesh. Shylock, the miserly Jew, wanting to make good on his promise of a pound of flesh, demands that his debt paid. All attempts of mercy and consideration fell to deaf ears, thus culminating into a trial in the court of Duke of Venice. Standing counsel for the debtor Antonio was Lady Portia, assisted by Nerissa. Both had disguised themselves in the best to maintain anonymity and obscurity. Channeling her inner Dinah, Portia appealed to the human side of the Jew. For forgiveness is a quality synonymous with God. But to no avail, Shylock gladly refused. Going on her feet, she declared the original bond to be null and void due to the Jews' malified intent, as well as challenging him to cut a pound of flesh, but on a condition. Guess what? Yes, without shedding a single drop of blood. Now, one of the characteristic features of the Elizabethan era was the concept of happy endings. And thus, keeping in with the trend and the theme, Shakespeare made sure that the order was restored. Keeping true to the rule of law and principle of natural justice, Let us witness this depiction of truth over deceit, good over malfeasance, love over hatred. and mercy over inhumanity. So please put your hands together for the artists that you will be going to see within a few moments who have disguised themselves in the best to pay an ode to the bard. Bring us the letter. Call the messenger. Came you from Padua, from Bellario? From both, Malo, Bellario preach your praise. Why dost thou whet thy knife so earnestly? To cut the forfeiture from that bankrupt there. Not on thy soul, but on thy soul. Ha, Jew, thou makest the knife keen, no, not the handman axe, but have the keenness of the sharp envy. Can no prayers pierce thee? No, none that thou hast wit enough to make. Oh, with thou damned inexorable dog, and for the life let justice be accused. Thou almost makest me waver in my faith to hold opinion with Pythagoras, that soul of animal infuse themselves. Till thou canst rail the seal from off my bond. Thou but offendest thy lungs to speak so loud. Repair thy wit, good youth, as it will fall to cureless ruin. I stand here for law. This letter from Bellario doth commend a young and a learned doctor to this court. Where is he? He attended here hard to know by your answer whether she'll admit him. With all my heart, some 3 or 4 of you, go, give him the courteous conduct to this place. Meantime, the court shall hear Bellario's letter.
Grace shall understand that at the receipt of your letter, I am very sick. But in the instant that your messenger came, a loving visitation was with me in Rome. Is Balthazar. I acquainted him with the cause in controversy between the Jew and Antonio the Pagan. We turned over many books together. He is furnished with opinion, which better own earnings, the greatness whereof cannot be enough, comes at my importunity to fill up your grace request in my stead. I beseech you, let his lack of years be no impediment to let him lack a reward estimation. For I never knew so young a body with so old a head. I leave him to your gracious acceptance, whose trial shall better publish his commendations. You hear the learned Bellario, what he writes, and here I take it is the doctor come. Come, give me your hand. Came you from old Bellario? I did, my lord. You are welcome. Take your position. Are you acquainted with the difference that holds the present question in the court? I am informed thoroughly of the cause. Which is the merchant here and which the Jew? Antonio and Shylock both stand forth. Is your name Shylock? Shylock is my name. Of a strange nature is this question. Herein such that the Venetian law cannot implement it, as you do, you see. You stand within the link, do you not? Aye, so he says. Do you confess the boy? Yes, I do. Then must the Jew be merciful. On what compulsion must I? Tell me that. Quality of mercy is not strange. It droppeth as a gentle rain from heaven upon the place. It is twice blessed. It blesseth him that gives, and it blesseth him that takes. It is mightiest in the mightiest. It becomes the throne monarch, better than his crown. It is the attribute to the God himself, and earthly power doth make like his God when mercy sees its justice. My deeds upon the head. I gave the law, the penalty, and the forfeiture of my bond. Is he not able to decide the money? Yes, I tendered it for him in the court. Here is the money. If this will not suffice, I will be bound to pay 10 times over on forfeit of my head, my heart and my hand. If this will not suffice, that malice bears down truth. There is no power in the Venice that can alter a decree established, and it will be recorded for the president, and by the same example will rush into the state. It cannot be. A Daniel come to judgment. Yeah, Daniel. Oh, wise young judge, how I do honor thee. I pray you, let me look upon the boy. Here it is, most reverend doctor. Sherlock, there is thrice the money offered thee. An oath, an oath. I have taken an oath in heaven. Shall I lay perjury upon my soul? No, not for Venice. Lawfully, by this bond, a Jew may claim a pound of flesh to be cut off by him. There is the merchant's heart. Be merciful, Sherlock. Take thrice the money. Bid me dare the bond. No, when it is paid according to tenor, it doth your worthyful judge, and you know the law. I stand here for law. Most heartily, I do beseech the court to give the judgment. Why then this? It is so. You must prepare your bosom for the Jew's knife. Most rightful judge. The penalty, which is becomes due, is entirely permissible and fully in accord with the intention and the purpose of the law. Most rightful judge, most upright judge. Are How there much balance- more elder art thou than thy looks? Are there balance here to weigh the flesh? I have them ready. Have by some surgeon Sherlock on your charge to stop his wounds, lest he do bleed to death. Is it so nominated in the bond? It is not so expressed. But what of that? It
were good, you do so much for charity. I cannot find it. It is not in the bond. You, merchant, have you anything to say? But little, I am armed and well prepared. Give me your hand, Bassanio. Fare you well. Commend me to your honorable wife. Tell her the process of Antonio's end. Say how I loved you. Speak me fair in death, for if the Jew do cut deep enough, I will pay it instantly with all my heart. Antonio, I am married to a wife, which is as dear to me as my life. But my wife and my life are not with me, esteemed above thy all. I here sacrifice them all to this devil to deliver you. Your wife would give you little thanks for that. If she were by to hear you make the offer. I have a wife who I love, I protest. I would she were in heaven, so she could entreat some power to chain this cursed Jew. It is well. You offer it behind her back. Otherwise your wish would have make else in that quiet house. We trifle time. I pray thee, we pursue sentence. The pound of same merchant's flesh is thine. The court awards it, and the law that gives it. Most rightful judge, most upright judge. Therefore, Antonio, liberate your bosom. Most learned judge, a sentence, come prepare. Tarry you! There is something else. You are not permitted to shed a single drop of merchant's blood. The words expressly are a pound of flesh. You may take a pound of flesh, but you must not shed a single drop of blood. If you do so, your whole property will be seized by the state of Venice. Is that the law? You can see the act with your own eyes. As you are insisting upon the justice, you shall surely have justice. And you shall have justice to a great extent than you wish to have. A Daniel come to judgment, a second Daniel Jew. Now infidel, I have you on the hip. I accept the offer then. Pay the bond thrice and let the Christian go. It is ready for thee. Soft, the Jew shall have justice. Soft, no haste, the Jew shall have nothing but the penalty. A Daniel, a second Daniel. I thank the Jew for teaching me that word. Therefore, get ready to cut off the flesh. You must neither cut less nor more than an exact pound of flesh. If you do so, your whole land and possessions will be seized by the state of Venice. O upright judge, mark you a learned judge. Where doth the Jew pause? Take thy forfeiture. O learned judge, mark you a learned judge. Give me my principal and let me go. Here it is. He hath refused it in the open court. He shall have nothing but the penalty. Shall I not have barely my principal then? Thou shalt have nothing but the forfeiture to be so taken as thy peril Jew. Why then the devil? Give him good of it. I'll stay no longer in question. Tarry, Jew. There is another hold upon you. There is the law of Venice. If an alien, directly or indirectly, attempt to seek the life of any citizen,
The party against him shall seize half of the property, and another half of the property will come under the private coffer of the state, and the life of the offender lies in the mercy of the Duke. Then thou shalt see the difference of our spirit. I pardon thee thy life before thou asked for it. For half thy wealth, it is Antonio's, and other half comes to general estate, which humbleness may drive into fine. I am content. I pray thee, let me go home. I am not well. Send the deed after me, and I will sign it. This performance. Now once again, please welcome an amazing school choir singing the song Aao Hum Sab Haath Milaye. La 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 la.
cherish our soul by enchanting a beautiful song in their soothing voice. Ruba, ever heard of Maasai, Himba and Zulu? Yeah, wait, did you just fall in love with tribals? Oh, no, never. I'm just giving enough hints about our next act. While modern dances have allowed dancers to have more room for self-expressions, Dance forms like tribal dance have become a way of preserving cultural identity. So today, let's dive into the priceless treasure trove of Indian tribal folk dance, which manifest the captivating culture of our country in the form of melodic beats. In spite of being uncivilized, having no culture, they still show happiness, joy, sorrow, and most importantly, unity. Yes, audience, this dance is a true depiction that whether you have taken any professional training or not, what most important is, your heart loves to dance. Put your hands together because this is my promise to you that this performance will leave you breathtaking. So once again, see your kids ruling on the stage and setting the stage on fire by Mufasa, the ancient tribal dance. Audience, put your hands together. The
performance. Hope you all are enjoying. So let's move ahead. Dance is one of the most divine form of art. It is much more than moving your hands and shaking your legs. The rhythms of the world are all wrapped up in a single activity, dance. Be it the soft beats of the heart, the rustles of the leaves, splash and fall of the rivers as it cascades on the rock. Rhythm is everywhere, and where there is rhythm, there is dance too. Happiness, joy, harvest, celebration are just different stages of life. There is dance for everything. And as long as there is dance, we need not to worry about happiness. So join us on the beautiful journey of Jubilee Squad as we map the world's best formation dance by the lively girls of class 8 and 9. Give them a big hand.
give them a big hand. The harder you work for something, the greater you will feel when you achieve it. Once again, let us drive into the roads of success and felicitations. To honor such bright ones, I'll invite Mr. Rashid Khan and Mr. Izar Ansari, the members of the managing committee, along with Principal Ma'am, to kindly come up and do the honors. We begin with class 7th A, Gaurav Patel, Mohammad Zaid and Shivang Yadav. Next we have Shruti Singh, Ritik Kumar and Soumya Agnihotri. From class 8A, we have Mohammad Ayan, Prakhar Dwivedi. From class 8B, we have Shikhar Gupta, Amina Azim and Isha Yadav. From class 9th, we have Mahima Sharma, Anuj Avasti and Sadia Shahid. From class 9B, we have Nilesh Singh Yadav, Shiva Singh Gautam and Alka Patel. It's time for 11th A Science, Pragya Dwivedi, Mohammad Danish and Nancy Verma. Next we have the 11th week commerce. We have Ishu Gupta, Shagufa Fatima and Mohammad Saif Khan. Hello. Thank you, sir, and thank you, ma'am, for doing the honors. नमस्कार, हम आपके सामने एक ऐसा नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो दहेज प्रथा पर आधारित है। दहेज एक खतरनाक कुरीति है जो कन्या पक्ष के लोगों के लिए अभी शाप बन गई है। तभी तो आज के युग में भी लड़की के पैदा होते घर में मातम सा छा जाता है। पिता उसकी शादी की कल्पना में
दुखी हो जाता है। आज के युग में भी कई सुंदर, बुद्धिमान, पढ़ी लिखी लड़कियां दहेज ना दे पाने के कारण अविवाहित रह जाती हैं। दहेज एक प्रथा नहीं है, भीख मांगने का सामाजिक तरीका है। फर्क इतना है बस, देने वाले की गर्दन झुकी रहती है, लेने वाले की अकड़ बढ़ी रहती है। इसलिए इस समस्या को दूर करने के लिए आज की युवा पीढ़ी को आगे आना ही होगा, दहेज रूपी दानों का करना ही होगा। तो देखिए नाटक बहू की विदा। अरे यार इनके पास रमेश, ओ रमेश, रमेश कहाँ है तू? अरे सुबह सुबह शोर क्यों मचा रहे हैं? और क्या मचा रहा हूँ? रमेश को बुला रहा हूँ। कहाँ है वो अभी तक? वो तो अभी सो रहा है। सो रहा है? अरे देवी उठाओ जाके उसे। जाती हूँ। हाँ। रमेश, ओ रमेश, उठ, देख तेरे बाबूजी तुझे बुला रहे हैं। क्यों चिल्ला रहे हैं वो? अरे मुझे नहीं पता, जा खुद पूछ ले। जी बाबूजी। जाना नहीं है क्या? कहा? गौरी को लेने। अरे मैं तो भूल ही गया था, आप चिंता न करें, बस मैं अभी जाता हूँ। अरे रामू, जरा दरवाजे पे देखना कौन है। बाबूजी, चरण स्पर्श। बाबूजी, क्या सोचा है आपने? विदा नहीं होगी। लेकिन बाबूजी जरा सोचिए तो, यदि विदा नहीं हुई तो बहन की क्या दशा होगी? मैंने उसकी दशा का ठेका नहीं लिया। हर लड़की अपना पहला सावन हंस खेलकर सखी सहेलियों के साथ बिताने का सपना देखती है। अच्छी तरह जानता हूँ। ये जानकर भी मैं मजबूर हूँ। अगर माँ बहन का इतना ही ख्याल था तो दहेज पूरा क्यों नहीं दिया? जी, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना भी हो सका हमने दे दिया। फिर भी अगर तुम्हारी सामर्थ्य कम थी तो अपनी बराबरी अगर देखते, झोपड़ी में रहकर महल से रिश्ता क्यों जोड़ा? जी क्या? इना तो दूर, बारात की खातिर भी ठीक से नहीं की। मेरे नाम पे जो धब्बा लगा, मेरी शान पे जो ठेस पहुंची, भरी बिरादरी में जो हंसी हुई, उस करारी चोट का घाव आज भी हरा है। बाबूजी, आप इस समय तो विदा कर दें, हम गौने में आपकी हर मांग पूरी करेंगे। मैंने दुनिया देखी है प्रमोद, ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए, और तुम कल के छोकरे मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो। बाबूजी, ये आप क्या बोल रहे हैं? ठीक कह रहा हूं। विदा तभी होगी जब 5 लाख नगद इस हाथ पे रख दोगे। बाबूजी, ये तो सरासर अन्याय है। शिकायत आपको हमसे। उस भोली भाली लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा है जो विदा न करके आप उससे बदला ले रहे हैं? यदि रमेश बाबू होते तो वो क्या कर लेता? मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं उसमें। मेरा बेटा है वो, तुम्हारी तरह
बड़ों के मुंह लगने की बदतमीजी करने वाला कोई हमारा छोकरा नहीं। बाबूजी, बेटी वाले समझकर आप हमारा अपमान कर रहे हैं, लेकिन ये ना भूलिए कि आप भी बेटी वाले हैं। हाँ, हम भी बेटी वाले हैं, मगर तुम्हारी तरह नहीं। पिछले महीने हमने भी अपनी गौरी की शादी की, वो खातिरदारी की कि देखने वाले दंग रह गए। इतना दहेज दिया कि बारातियों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। तुम मेरी बराबरी करते हो? हाँ, बेटी वाले होकर भी हमारी मूंछों पे ताव है, समझे? जी? रमेश गया है गौरी को लेने, कुछ देर में उसे लेकर आता ही होगा। मेरी बेटी पहला सावन यहीं बिताएगी। तुम्हारी बहन के सपने कभी पूरे ना होंगे और उन सपनों के खून का दाग तुम्हारे हाथों और तुम्हारी माँ के आंचल पर होगा। जो हमारी बहन है, क्या वो आपकी कुछ नहीं लगती? प्रमोद, बेटी और बहू को एक ही तराजू पर तौला चाहते हो? बेटी बेटी है और बहू बहू। ठीक है, जब आप अपनी जिद पर अड़े हैं तो आपसे विनती करना व्यर्थ है। क्या मैं एक बार अपनी बहन कमला से मिल सकता हूँ? हाँ जरूर, और उसे ये भी बताते जाना कि अगली बार मेरे लिए भरम लेकर विदा कराने कब आओगे। अरे सुनती हो गौरी की माँ? अरे जरा सुनती हो? बहू को भेज दे। जी भेजती हूँ। भाई से मिल ले, मैं तब तक देखूं कि माली के बच्चे ने झूला डाला या नहीं। गौरी के लिए झूला डलवा रहा हूं। हमारे व्यवहार से बाबूजी के कलेजे पे जो घाव हो गया है, उन्हें उसका मरहम चाहिए और उस मरहम की कीमत है 5 लाख रुपए। 5 लाख? तुम चिंता ना करो, 5 लाख का प्रबंध हो जाएगा। इस गिरी हालत में भी हमारा घर 7-8 लाख में तो बिक ही जाएगा। भैया, आपको मेरे सुख सुहाग की सौगंध, मेरे पिता के लिए घर ना बेचिए भैया। ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम नहीं चाहती कि तुम अपना पहला सावन सखी सहेलियों और माँ के साथ घर पर बिताओ? भैया, किस लड़की की यह कामना ना होगी, पर कामना की पूर्ति के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाना कहाँ तक ठीक है। 1-2 साल में आपको विमला का भी तो ब्याह करना है। लेकिन तुम भैया, मेरा विश्वास करें, सच विदा ना होने से मुझे जरा भी दुख ना होगा। कमला, ये तुम क्या कह रही हो बहन? भैया, गौरी आ रही है, बहुत अच्छा स्वभाव है उसका, हर समय हंसती हंसाती रहती है। उसका साथ पाकर मुझे सखी सहेलियों की कमी बिल्कुल नहीं अखरेगी। लेकिन आज नहीं तो कल रुपया देना ही पड़ेगा कमला। इन कागज के टुकड़ों पे अपना स्नेह और प्यार बेचने वालों के बीच इस कदर कब तक रह पाओगी तुम? भैया, माँ जी तो ममता की मूरत है, बाबूजी जरा जिद्दी स्वभाव के हैं, पर समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, सब एक ही धातु के बने। हो सकता है माँ जी की ममता सिर्फ दिखावा हो। कैसा दिखावा? अरे क्या बातें हो रही थी भाई बहन में? जी बस खुशल मंगल पूछ रहा था। हाँ, विदा के लिए क्या कहा उन्होंने? समझ गई, अपनी जिद क्या की तो वो किसी की सुनते ही नहीं है। जब तुम्हारी चिट्ठी आई थी तभी मना कर रहे थे, मैं तो उन्हें समझाते समझाते हार गई। अरे प्रमोद,
बताते क्यों नहीं कितने रुपए लेकर विदा करने को तैयार है वे? जी रुपयों की तो कोई बात ही नहीं हुई, वो तो माँ से झूठ बोलते हो, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। इंसान से ज्यादा प्यारा उन्हें पैसा है। बताओ कितने रुपए लेकर विदा करने को तैयार है वो? अरे प्रमोद, बताते क्यों नहीं, बताओ। 5 लाख। बस मैं तुम्हें देती हूँ, पैसे लेकर उनके मुंह पर मार कर कहना कि ये लो कागज के रंग बिरंगे टुकड़े जिन्हें तुम इंसान से ज्यादा प्यार करते हो। मैं अभी लाती हूँ। ठहरिए माँ जी, मुझे रुपया नहीं चाहिए, मैं बिना विदा कराए जा रहा हूँ। बिना विदा कराए जा रहे हो? ये तुम क्या कह रहे हो प्रमोद? मेरे रहते विदा ना हो, ये कैसे हो सकता है? मैं भी माँ हूँ, मैं माँ के दिल को अच्छी तरह से समझती हूँ। जिस तरह उतावली होकर मैं गौरी की राह देख रही हूँ, उसी तरह तुम्हारी माँ भी तो कमला की राह देख रही होगी। नहीं, विदा जरूर होगी। जा बेटी, तू तिजोरी से पैसे निकाल ला। नहीं माँ जी नहीं। अरे जरा सुनती हो, गौरी के आने का समय हो गया है और तुमने कोई तैयारी ही नहीं की। जा बेटी, तू अंदर जा। अरे तुम यहीं खड़ी हो, जाकर अंदर तैयारी करो। जरा ये भी तो देखें कि नाक वाले अपनी बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। गालियों के अलावा कभी सीधी बात निकली है तुम्हारे मुंह से? जब देखो तब बेढंगी बातें। तुम्हें तो मेरी हर बात बुरी लगती है। तुम समझते हो दुनिया में तुम ही नाक वाले हो, बाकी सब नकटे हैं। तुम्हें मेरी हर बात बुरी लगती है। प्रमोद, तुम ही बताओ, मैंने कुछ गलत कहा? ठीक कह रहे हैं आप, आज के युग में जिसके पास पैसा है वही नाक और मूंछ वाला है, बाकी सब नक्कटे और मुचकटे हैं। आ गई मेरी गौरी। अरे खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाकर अंदर तैयारी करो। रामू, जरा दरवाजा खोलना। जी बाबूजी, आया। बाबूजी केवल भैया आए हैं। भैया आए हैं? गौरी कहाँ है? वो नहीं आई। नहीं आई? क्यों नहीं आई? तबीयत तो ठीक है उसकी? जी हाँ। फिर? उन्होंने विदा नहीं की। विदा नहीं की? भैया, गौरी दीदी नहीं आई। काहे नहीं आई? भैया, दीदी नहीं आई। रामू, अंदर जा। क्यों नहीं की विदा उन्होंने? कह रहे थे दहेज पूरा नहीं दिया गया। दहेज पूरा नहीं दिया? हमने तो जीवन भर की कमाई लगा दी और उनकी नजरों में दहेज पूरा नहीं दिया। लोभी कहीं के। उन्हें क्यों भला बुरा कहते हो? बेटी वाले चाहे अपना घर द्वार सब भेज दें, लेकिन बेटे वालों की नाक वो सिकुड़ी ही रहती है। मगर शराफत और इंसानियत? हाँ, अब शराफत और इंसानियत की दुहाई देते हो। कुछ देर पहले तो चुप रहो तुम। बहुत चुप रही, अब नहीं रहूंगी। आखिर क्या कमी है बहू के दहेज में, मगर तुम हो की? मेरी बेटी की विदा ना करके उन्होंने मेरा अपमान किया है। मैं तुम भी तो किसी की बेटी की विदा ना करके किसी का अपमान कर रहे हो। गौरी की माँ, अब भी आंखें नहीं खुली। जो व्यवहार तुम अपनी बेटी के लिए दूसरों से चाहते हो, वही दूसरों की बेटी को भी दो। जब तक बहू और बेटी को एक नहीं समझोगे, ना तो सुख मिलेगा और ना ही शांति। बहू और बेटी, बेटी और बहू, अजीब उलझन है, कुछ समझ नहीं आता। अगर हर बेटे वाला ये याद रखे कि वो एक बेटी वाला भी है, तो सब उलझने सुलझ जाएं। शायद तुम ठीक कहती हो। आप मुझे आज्ञा दीजिए बाबूजी। ठहरो प्रमोद, मेरी गाड़ी का समय हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। भरोसा रखिए, अगली बार मरहम लाना ना भूलूंगा। मुझे और लज्जित ना करो प्रमोद। मेरी चोट का इलाज बेटी के ससुराल वालों ने दूसरी चोट से कर दिया है। बाबूजी, क्या? मुझे माफ कर दो प्रमोद, मैंने तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। दहेज के लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। बाबूजी, आप ऐसा ना कहिए।
ठीक कह रहा हूं बेटा, कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर देती है। अरे खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या ताक रही हो? जाकर अंदर तैयारी करो, बहू की विदा नहीं करनी क्या? जी करनी है बहू की विदा। आपने देखा नाटक बहू की विदा। हम अपने समाज से दहेज प्रथा को पूरी तरह से हटा सकते हैं। बस हमें दो बातों को ध्यान में रखना होगा। पहली बात, अगर आप एक लड़की हैं तो आपको ये बात याद रखना होगा कि अगर आपके ससुराल वाले दहेज की मांग कर रहे हैं तो आप ऐसे घर में विवाह ना करें। और दूसरी बात, यदि आप एक लड़का हैं तो आपको ये बात याद रखनी होगी कि आपको अपने वैवाहिक जीवन में दहेज जैसी चीजों को नहीं आने देना है। बस हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। आज हम ये शपथ लेते हैं कि ना ही दहेज देंगे और ना ही दहेज लेंगे, क्योंकि बहू ही असली दहेज है। धन्यवाद। Audience, I know the weather is very harsh, but please don't go because the time has come. For our next performance is our dance. A dance full of life, A dance full of energy characterized by flexibility. and 360-degree rotating poise. A dance that forces your toes and heads to swing with it. And I bet that when the music will be played, most of you would not be able to retain yourselves on chair A dance accompanied by swift action. and rapid movement. Ladies and gentlemen, hold, Your breath. for we are going to unleash high intensity music. And our dance cannot be turned out by any art. A dance that outperforms even the most modern dances till now. Audience, fingers crossed, presenting Bhangra. Roadshow presents Please give them a big hand. Time to roll out, boys. Yo DJ Hans, drop it.
I request everyone to kindly stand up for the national anthem. Attention. Well, ladies and gentlemen, allow me to take a few more minutes of yours just to present a warm vote of thanks. Event like this cannot happen overnight. The wheels started rolling from many months ago. It requires planning and a bird's eye for details. We have been fortunate enough to be backed by a team of very motivated and dedicated staff. Gratitude is the fairest blossom which springs from the soul that make happy both the giver and the receiver. First and foremost, we thank Lord Almighty. His unfailing love keeps us marching towards a better tomorrow.
I, Mrs. Afreen Fatima, present my gratitude to our respected Principal Ma'am for her encouraging speech. We all are inspired by your great words. Ma'am, it's your vision and leadership that have brought everything possible in the campus. Many thanks to our students. Your energy, enthusiasm, participation and every action on stage made this a grand evening and left us spellbound. Thanks to also our non-teaching staff, coordinators, clerks and administrators. We appreciate your efforts and to keep the school running as per the schedule. Special thanks to our technical arrangement team, stage setting crew, lighting arrangement team and all the musicians who have produced the elixir of melodious tones, the media persons also. And also big thank you to the members of the managing staff and the parents of all the talented kids for your valuable presence on this evening. A kind gesture of gratitude to all the directly or indirectly involved in the program. Thank you very much. Hello. I know the show has ended and Afreen has already presented the vote of thanks, but it was my duty and I am really happy that it was a wonderful show. Thank you everyone, members of the managing committee for sparing their valuable time, especially Sharif Saab, whom I made him sit till the end. Thank you so much, Rasha Saab, Izhar Bhai, and all the parents, teachers, my hard-working, devoted, dedicated teachers. Believe me, each and every item was very good. Students who were there on duty, thank you so much, head boy, head girl, and all the post holders, the volunteers, and Gopalji for the stage, lightning, Suren Bhai and his team, Amit for a wonderful show, and musicians, Ibrahim sir and his team, Tarun and all, thank you so much. Everybody did a wonderful job. We had no choreographer. My teachers were the choreographers. They have done a wonderful show. They really need a good round of applause and I appreciate, thank you so much. And it is always a teamwork. It's not that me or you are doing. All the ones who are on the stage, behind the curtain, children, the efforts, the parents who have cooperated, I must thank them for every small thing. Thank you so much. And nobody is demanding for a holiday on Monday. Okay. I know everybody is so tired, so Monday is a holiday. Thank you so much. I love you children. I love my teachers. Thank you so much.